What do you mean by hyperlink? Anyone? You can give me the definition. What is hyperlink? आपने बहुत सारे वेब पेजेस पर hyperlinks use किए हैं. When you click on a hyperlink, it opens another page. Whenever you move your mouse pointer on the hyperlink, it changes to the hand symbol, and you can click on that link, and that will open a new page. And that link can be your text, and that link can be your image. कोई image भी हो सकती है that can act as a hyperlink. कोई इमेज एज अ हाइपरलिंक एक्ट कर सकती है कि हम पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाएं और वो क्लिक करें और वो कुछ और इमेज, कुछ और नया पेज खुल जाए. सो इट कैन बी एनी इमेज, इट कैन बी एनी टेक्स्ट. सो अ हाइपरलिंक, नोट डाउन द डेफिनेशन. A hyperlink is a highlighted text. Highlight कैसे होती है? By underlining and of, usually it is in blue color. A highlighted text or image that stores the address of some other web page or any other document. It could be picture, it could be any other document. कोई पीडीएफ फाइल का लिंक हो सकता है कि हम क्लिक करें तो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाए, क्लिक करें तो कोई इमेज ओपन हो जाए. So hyperlink is a highlighted text or image that stores the address of some other web page or document. Okay, this is hyperlink. Now, how you can create the hyperlink? To create hyperlink, we will use anchor tag. This is called anchor tag. It is used to create hyperlink. This tag is used to create hyperlinks. Anchor tag. A tag, that is a full form is anchor tag. A tag is used, full form of A tag is anchor tag. This tag is used to create hyperlinks. And जैसे image tag में आपके पास important attribute था src. Without src you will not be able to use the img tag. हम img tag के साथ src use करते हैं to define the source of image. Similarly, we can use the href tag. We can use the href tag, href attribute. ठीक है, href attribute along with the anchor tag to specify the source of web page or document that you want to open, or document that you want to open by clicking on the link. कि लिंक पे क्लिक करने पे क्या ओपन होना चाहिए, that is specified by using the href tag attribute. Anchor tag, href attribute of anchor tag specify the source of web page or document that you want to open. In the similar way, जैसे हमने image का source दिया था with the complete path, कि पूरा path बताना है कि कौन सा path है, क्या page है, क्या एड्रेस है उसका, किस फोल्डर के अंदर है, क्या नेम है, क्या एक्सटेंशन है, पूरा पाथ देने के बाद देन href इक्वल्स टू डबल कोट्स में पूरा पाथ स्पेसिफाई करेंगे, देन इट विल ओपन दैट वेब पेज. नाउ href हो गया. नाउ द टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को एज अ हाइपरलिंक क्रिएट करना है, डिस्प्ले करवाना है कि ये लिंक है, ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो href में जो एड्रेस दिया है वो ओपन होगा. तो वो टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होगा? द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एज अ हाइपरलिंक will be given within the A tag, opening and ending tag. Within opening A tag and ending A tag. ठीक है, between that text will be given between opening A tag and closing A tag. Between, because this is a container tag, opening A tag and closing A tag.
The text that appear as a hyperlink will be given between opening a tag and closing a tag. So full syntax क्या बन जाएगा हमारा? I'm giving you the syntax. What will be the syntax now? A tag, then href equals to document name and source, document source, ठीक है, close, then text that will appear as a hyperlink. Suppose click here, या whatever text you want to display. ठीक है, जो भी टेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे that will act as a hyperlink. That means when we place my mouse pointer on this text, it will change to a hand symbol, and when I click on this text, it will open this document that is given as a data document source, जिसका लिंक मैंने वहां पे href में स्पेसिफाई किया. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यूज कैसे क्या है और कैसे हमने इसको यूज करना है? यस निधि, राघव, यहाँ तक क्लियर है बेटा? कि href equals to document source. This will be the document that will open by clicking on the text that I will type between the opening and closing a tags. Okay? हाँ जी, समीक्षा, परी, any doubt बच्चे? मतंगी, ईशान, is it clear? Okay, now we are going to use it. Note down हो गया बेटा सबका? Note down कर लो, so that I can go to the notepad and we can start making the links, start creating the links. Okay, I'm going to notepad. We are going to open the tag HTML, then head, then title. What title we should give today? Using hyperlinks. Close the title tag, then close the head tag. Now open the body tag. I'm giving the BG color equals to gray. Okay, now I want to display. It may be कि some paragraphs आ रहे हैं, paragraphs के नीचे अपने कुछ links दिए हैं, कुछ text आ रहा है, कुछ tables आ रहे हैं, कुछ pictures display कर दिए हैं और उसके नीचे link आ रहा है. तो और you can have a simple home page जिसमें सिर्फ links आ रहे हैं. So it's up to you. So here I'm going to create a href equals to. Here I want to give the address. So that address can be the address of the document which is stored on your computer, on your device, or that address can be like this of any web page. Okay, close it. Now click here to open Google search engine. Yes, Arman. Now close the A tag. This will be your first. Excuse me, ma'am. Yes, बच्चे. मैम ahref में अगर हम जौन सा भी हम वेब ब्राउजर लिखेंगे उसी में ही जो हमने क्रिएट किया वो ओपन होगा कि किसी और में भी हो जाएगा? नहीं, अभी हमने ये पेज, पहले ये पेज ओपन करेंगे. जब ये पेज ओपन करेंगे तो हमारे पास ये लिंक अपीयर होगा. आई एम गोइंग टू सेव इट. ठीक है, जब लिंक अपीयर होगा देन आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक एंड इट विल ओपन द गूगल. सेव एज. ओके मैम. ठीक, मैं अभी कर रही हूँ इसको सेव. सपोज आई एम सेविंग इट एज ऑल फाइल्स. ठीक है, आई एम हैविंग सपोज नेम दे रहे हैं हम इसको linking.html. Save it. Now go to the browser, open the file, Ctrl+O, documents. See, यहाँ पे देखो लिंक डिस्प्ले हो रहा है. क्लिक हियर टू ओपन गूगल सर्च इंजन. ब्लू कलर में आ रहा है. बाय डिफॉल्ट लिंक्स आर डिस्प्लेड इन ब्लू कलर. पॉइंटर देखो, Yes, पॉइंटर ma'am. लेके गई हूँ, हैंड शेप आ रही है. Now if I click here, Yes, ma'am. the file could not be accessed. If the path is wrong, it will create an error. I can go back. Okay, I will check the path. What is the path? Why there is no opening it?
रिकॉर्ड फॉर एग्जैक्ट लिंकिंग, ठीक है, हम कॉपी कर सकते हैं पाथ को। अभी मैंने कॉपी किया पाथ को। नाउ आई एम गोइंग टू द ब्राउजर, नाउ आई क्लिक हियर, again it is not getting, maybe some issue with the network also, or we can give the path मैम of, नो, हाँ जी मैम आपको .com की जगह .co.in लिखना है। बेटा वो मैंने कॉपी किया पाथ। सपोज आई एम ओपनिंग द पेज, आई एम ओपनिंग एनी वेब पेज, एनी वेबसाइट, ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो, उसका पाथ कॉपी करके आप वहां यूज कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी, सपोज दिस इज द सर्च इंजन आई एम ओपनिंग, आई एम कॉपिंग द पाथ फ्रॉम हियर, ठीक है। यू कैन ओपन एनी वेबसाइट, सपोज एनी अदर वेबसाइट आई एम ओपनिंग, ठीक है, you can copy that path and you can paste that path to open that website. Or you can give the link of the document that is in your computer. Suppose हमने जो कल पेजेस क्रिएट करे हैं, वेब पेजेस क्रिएट करे हैं, जो कल हमने कौन से वेब पेजेस करे जिसमें HR यूज किया था, पैराग्राफ यूज किया, या कल हमने मार्क्यू टैग यूज किया, तो we had saved that pages, so we can give the path of that page also. Okay, let's see whether it works or not. Otherwise it works every time. I don't know why it is giving. So देखो अभी मैंने किया, I opened this, ठीक है, click here to open, मैंने क्लिक किया, जो कॉपी किया था पाथ मैंने वो यूज किया, that website is opening. See, हमने यहाँ क्लिक किया, now it is opening this website जिसका एड्रेस हमने यहाँ पे href में दिया है, ये वाला. So you can have the address of any website that you can have, that you can copy and paste it in href. So that web page will open. Suppose I'm giving some another document now, a href equals to. Now I want the document जो हमने कल मार्क्यू वाला document use किया है. So first of all, open that document here, copy the path. See, this is the view document. I'm copying the path from here, going to the coding. Now pasting it here, close the double quotes, close the angle bracket. Now type the text displaying marquee, close a tag. So now there will be two links. I'm saving it, going to the browser, open the file, linking. Now we are having two links, but now see both the links are in same line. What mistake I had done? What mistake I had done? Both the links are appearing in the same line. Ma'am, both the links are in same line. Why? What should be done? What should be done to make it correct? Ma'am, we must copy and write it in the down. No, you are forgetting the BR. Line break. I want to display both the links in different lines. I'm giving BR. Okay. So now refresh it. Now two links are there. If I click here, it will open the cartoonnetwork.com. If I click here, it will open the marquee page. This. Go back. It will open this website. Go back. It will open marquee page. Now two links are created. One link is opening the website. Second link is opening the document which is in my computer. Similarly, you can open any image. आप क्लिक कर सकते हो and you can say कि yes मैं इस लिंक पे क्लिक करूं और एक इमेज ओपन हो जाए. इमेज मुझे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं करवानी है, IMG टैग के साथ मुझे पेज पर नहीं चाहिए. हाँ, लिंक चाहिए कि मैं इस लिंक पे क्लिक करूं and that image should be opened. So that can be done in the same manner. I'm giving BR tag. ठीक है. I'm again, suppose I want to leave two lines. So I'm giving two BRs. Again a href equals to
double quotes. Now I need the path. So to copy the path, I will go to the browser. Okay, open the image that I want to use. Okay, here I'm having many images. So I will use any image that I want to open. Copy its path, Control C. Now go to the notepad and type it here, paste it here. Close the double quotes, close the bracket. Now type the text, happy birthday card. Okay, close A tag, this much. Now here we are having a Google search engine नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, Cartoon Network. So save it, go to the browser, refresh it. Now we are having 3 links. So this link will open cartoonnetwork.com, this link will open MyQ, and this link will open this web page. Image. Go back, click here, it will open image. Go back, displaying MyQ, it will open this web page. So you can have many links. All the 3 links are working properly now. Anji, is it clear? Anji, any doubt till now? Yes, anyone? Any doubt till now? मैम इनका कलर बाय डिफॉल्ट यही रहेगा जो By डिस्प्ले हो रहा है, default, पर्पल colors कलर. of the link is blue. Okay, when we click on the link, that means active link is red. And when we have visited the link, it is purple. This is the by default color. Yes, you can change the color of the links. You can change the color of the links. You can have the different color for your links. That colors can be defined in body tag. They are the attributes of body tag. I told you there are many attributes of body tag we had done. We had done the BG color, we had done the background, we had done the top margin, left margin, and text. 5 attributes we had done. Now for links, you can specify the color for your links on a web page. आपके web page पर links का क्या color होना चाहिए? Visited link का क्या color होना चाहिए? Active link का क्या color होना चाहिए? That can be specified in the attributes of body tag. 3 attributes are there. Link is equal to a link, that is active link. When we click on the link, it changes to red color. आपने देखा होगा जब click कर रहे होते हैं तब red color आ रहा होता है. तो link click करने पे red color की बजाय pink में हो जाए. And visited link, V link. The 3 options are there. V link should be, suppose I'm giving as white. कि जब मैं किसी लिंक को विजिट कर लूं तो वो व्हाइट कलर में होना चाहिए. ओके, तो वी कैन गिव दिस, सेव इट, refresh it. I knew it appears in white color. Why? Because all these 3 links we had visited already. हमने ये links already visit कर लिए हुए हैं. That is, it is displaying in white color. When I click on the link, it will change to pink. See, मैंने क्लिक किया, वो पिंक कलर में आ गया. ठीक है, अगर मैं कोई नया लिंक क्रिएट करूंगी तो दैट विल अपीयर इन रेड कलर नाउ. Suppose I'm creating a new link, ahref equals to, I need a new image or any document that I want to open. So I'm going to take the path of that. I'm opening a web page. Documents में हमारे पास एक था, okay, this first page. I'm copying the path. ठीक है, going to the notepad, pasting it here, double quotes close, bracket close, first web page, close A tag, save it, go to the browser, refresh it, open,
Okay, first web page again in the same line. हमने BR नहीं use किया. We are supposed to use BR to give the line break. Save it. Now go to the browser. Let's see. Click here. Now it will open this page. When I click here, it is pink. When I click here, it is pink. And when I visited it, it is white. ठीक है? Clear है बेटा? Everyone. Linking clear हो गई? How to create the links? Yes, anyone? Any doubt? Now it was like a text. हमने अभी तक जितनी भी linking create करी है, we are using the text as a link. But you can also use image as a link. मैं चाहती हूँ कि एक image आए और that image should appear as a link. मुझे किसी image को link बनाना है कि मैं image पे click करूँ तो कोई दूसरा web page open हो या कोई website open हो जाए या कोई और document open हो जाए. तो I can make an image as a link. That means अभी तक हमने ये लिखा है, ये text है between the A tag, opening A tag and the closing A tag, and this text is working as a link. Now instead of this text, I want image as a link. तो image को link बनाना है, तो that means that image should be inserted between opening and closing A tags. ठीक है? अगर हमने किसी image को as a link create करना है, that means I have to give that image here between the opening and closing A tags so that that image can work as a link. Okay? Suppose I am taking this image only, जो मैं image already यहाँ पे display करवा रही हूँ. I am using this address and I am inserting this image here. IMG SRC equals to double quotes image width equals to 100 height equals to 100 and suppose I'm giving border also, border equals to 5. Now instead of text, मैंने text की जगह क्या use किया? Image. See, pay attention to this part only. Anji, pay attention to this part only. IMG tag, A tag पे क्या आ रहा है कि href file open करे marku.html. कब open करे? When I click on this image. Now instead of text between the opening and closing tag, I had inserted an image. Now this image will act as a link. Save it. Go to the browser. Refresh it. Now see. 2 आ गया. Now click here. This image will open that web page. Now image क्यों open नहीं आ रही है? There may be some problem or issue with the link. I can open the link again. Open any image again and we can use that image as a link. जैसे हमने पहले use किया. Same way. Open any picture and use it as a link. Click here, copy it, go to the notepad and paste it. Okay, double quotes close नहीं किए थे हमने यहाँ भी. That's why problem was there. Refresh it. See. Now, if I click here, it will open cartoonnetwork.com. If I click here, it will open marku.html. And if I click here, it will open first web page. And if I click here, it will open Cartoon Network. Now I had inserted an image. That image will act as a hyperlink. Hanji beta, any doubt? Switch on your cameras. Abhishek, Harman, Akul, Samiksha, Pari, Madhav, everyone switch on your cameras. Hanji beta, any doubt in linking?
Yes, Akul, any doubt बच्चे? Harman? मैम लिंक ए लिंक और वी लिंक क्या है? Beta, they are the attributes for giving the color. They are the attributes for giving the color for your links. Link attribute of body tag that will give the color for your links on a web page. कि जितने भी links हम create करेंगे, that link will appear in yellow color. A link is your active link. Active link means when I click on the link, that link should be of pink color. V link is the visited link. When I open a link, मैं already visit कर चुकी हूँ उस link को, जो usually हमारा purple color में display होता है by default. That link should appear in white color. ठीक है? links किस color में आएंगे? A link active link हो गया and V link visited link. जो लिंक्स हम विजिट कर चुके हैं वो किस कलर में आएंगे? आपने इन वेबसाइट्स पे नोट किया होगा, जब आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, लिंक्स आते हैं, आप एक लिंक पे क्लिक करते हो, आपको ओके ठीक लगा, नहीं लगा, आप वापस बैक आते हो, तो वो जो लिंक आप विजिट कर चुके हो दैट अपीयर्स इन डिफरेंट कलर, वो अलग कलर में नजर आ रहा होता है, सो दैट यू नो कि यस ये विजिट लिंक हम विजिट कर चुके हैं, दूसरा किसी और लिंक पे क्लिक करना है, सो दैट इज योर विजिटेड लिंक. हाँ जी, क्लियर है? हाउ टू डिस्प्ले इमेज, हाउ टू डिस्प्ले इमेज एज अ लिंक, वो क्लियर हो गया कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द टेक्स्ट बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए टैग्स, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया है बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए टैग, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट आई एम गिविंग image, inserting image between the opening and closing a tags, so that it will display the image, and that image will act as a link because it is given between the opening and closing a tags. Okay, हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लो, so that I can move to the next topic, that is your last topic of your this HTML, that is your table. So table will take many tags are there for table. अगर आपको ये clear है, only then I will move forward. Yes, Kavish, Jasmine. काविश, जैस्मिन, बेटा किसी को कोई डाउट है? नोट डाउन कर लो, कोडिंग नोट डाउन कर लो. अंश, I think Arish is not in class. Arish and Ishan are not there in the class, na? Ma'am, I am there. Okay, you are there. Okay, camera off है. Okay, clear है बेटा? Okay, then I think I should move to the next. अगर आपके पास कोई doubt नहीं है, then I can move to the next topic. Now, note down next topic, creating tables. Make a notes. Creating tables, because we will need many attributes and many tags for creating the table. Creating tables in web page. First of all, for creating tables, you will need a table tag. Table tag. To create a table, to start creating a table in web page. Okay, to create a table, it is a container tag. That means there will be an opening tag and there will be closing tag. Okay, then for creating table, you will need many other tags also. First of all, in a table, whenever you create a table, you have rows and you have columns. Okay, you have rows and you have columns. For creating each row, कि मेरी ये row start हो गई है. For creating each row, you need a TR tag, table row tag. And then for creating each column, for value for each cell, you will need TD tag. That is your table data tag. Just a minute. I will. Okay, first, see here now. I'm showing you. You can note it down also. Anji, screen is visible.
Anji beta, screen is visible to everyone. Okay, here we are having table tag to define the table and tr tag to define each row in a table, th tag to define the headings in a table, and it makes the values in bold by default, and td tag to define the value of each cell in a table. Value for each cell in a table. Note down. So that means you will need 4 tags to create a table. First tag that you will need is table tag. Then you will need the tr tag to define the row. To define row of table. Full form of tr is table row. Full form of tr is table row. And it is used to define rows in a table, rows of a table. Then we are having th tag, that is the full form is table header, table head or table header. Then it is used to define headings in a table. Okay. Then we are having t tag, full form is table data. It is used to define values for each cell. हर cell में क्या value होगी to define that. th tag define the headings, that means usually in the first row we give the headings. That headings can be given by using the th tag. It makes the value bold automatically. जो भी values हम th tag के साथ define करेंगे, it will make them bold. It makes the values bold. हाँ जी, note down this. Note down हो गया. tr to define the rows of a table, th to define the headings in a table, and td to define the values for each cell. हाँ जी, note down हो गया. Okay, we will continue with this topic tomorrow. ठीक है, tomorrow we will start creating the table. First of all, we will learn the structure, कि how we are going to use these tags, in which order we are going to use it, and then we will start creating the tables. Till then, please practice hyperlinks. Hyperlinks को practice करके कल class में वापस आना. I am asking you the question. I will ask the questions. Okay. So in this week you are having Excuse me, test ma'am. also. Yes, Richard. Ma'am, please send the coding of today. Okay, I will send the coding of today and yesterday also. Okay, I will send the coding. Okay, ma'am. Hanji, in this week you are having test also. I think your test is on Friday. I sent the message yesterday in the group. You are having the test of chapter number 10. You will have the test for chapter number 10 of HTML. Okay.